Hi everyone, I hope you all are fine. Welcome to a new video. This video is specifically for CMA Foundation students who are, you can say that, appearing for December 2022 exam. In this video, I'll discuss about the exam strategy and you can say that study plan for remaining days. So today we are on 18th October and the exams will be, you can say that 13th January. On one day, all four exam will be, you can say that, finished. So I hope you have already aware that exam, you can see that exam form has already been, you can see the release. 30th November is the last date, and apart from this, 30th January date sheet has already been released by institute. So as of now, complete your classes. If you are doing self study, so complete all the study note of your respective four paper. Okay, what will be your strategy from today onwards to, you can say that, 20th, you can say that, 20th November, what will be your strategy? You can say that you have to complete your all four books. Okay, in one day, like in MWF, you have to read two subject, one theory or one practical. In TTS, you have to study two subject. For example, you can manage mathematics, statistics, or you can say that paper one or paper four in one day MWF. In TTS, you have to manage paper number three or paper number two. Okay, in Sunday, whatever you have studied, you just need to revise from Monday to Saturday, whatever you have studied. This you have to follow. You can 20th November, you have to complete your remaining study note. You have to complete your remaining, you can say that, remaining, you have to complete your remaining classes if you are taking classes or if you are managing self study. So complete your lecture or study note as soon as possible, all four subject. Foundation is very easy, you can easily correct if you follow consistency or discipline. Till 20th November, you have to complete your 20th November, you have to complete your all study note or classes. From 21st November to 20th December, you can see that you have to practice whatever you have studied, including MCQs. Then you can say that till then, institute will release the mock test paper or model test paper. Then you have to revise. Apart from this, all four subject, I have already shared all the subject wise MCQs and question bank. In question bank, it contains all the MCQs. In my Telegram channel, Pathway to CMA, or in the description of this video, I'll share the link. You can join, where you will receive all content of MCQs of all four subjects of CMA Foundation for December 2022 exam. It will helpful for you. Okay, 20th December, you have to one or two time revision. Okay, after that, you just focus to practice and practice MCQs. MCQ question bank I have already shared. Till then, institute release the mock test paper, model test paper. If you follow, I can assure that you can easily crack your foundation exam. Okay, and then you have to enter into the CMA intermediate. Simply in a simple manner, I am just repeating again. सबसे पहले 20 नवंबर तक आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी जितनी भी क्लासेस पेंडिंग है, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो वो फिनिश करिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी स्टडी नोट है हर एक चारों सब्जेक्ट के आप खत्म कर लीजिए। 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक आप जो भी आपने पढ़ा है, आप उसको दो बार रिवाइज करिए। 21 दिसंबर से लेकर आप मान के चलिए एग्जाम तक आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यूज की कंटेंट हर एक चारों सब्जेक्ट के मैंने टेलीग्राम पर शेयर करे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सर्च करोगे पाथवे टू सीएमए, आपको वहां पर मिल जाएगा, आपको फाउंडेशन से लेकर फाइनल और उसके बाद भी आपको टेलीग्राम चैनल आपको हेल्प करेगा। ओके ओके, सो एंड इसके अलावा जब इंस्टीट्यूट मॉडल टेस्ट पेपर निकालते हैं तो आपको प्रैक्टिस करोगे, अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से मैनेज कर लोगे। इसके अलावा एक और चीज जो है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एग्जाम कौन किस में दोगे, आप मोबाइल से दोगे, टैब से दोगे, या डेस्कटॉप से दोगे, या लैपटॉप से। कोशिश करना एक ही चीज को टिल एग्जाम के एंड तक कंटिन्यू करो। अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर अगर मोबाइल से दे रहे हैं तो मेन एग्जाम भी मोबाइल से दो, आराम से मोबाइल से दे सकते हैं। बट मैं तो प्रेफर करता हूं, अगर आप किसी के पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो उसी से दे तो बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू मोबाइल। बट स्टूडेंट्स मोबाइल से भी देकर क्लियर कर रहे हैं। ओके, डोंट इन्वॉल्व इन चीटिंग, इट इज माय सजेशन टू एवरी स्टूडेंट। आप चीटिंग में इन्वॉल्व मत होइए, वरना इंस्टीट्यूट एक टर्म, तीन टर्म, दो टर्म, पांच टर्म के लिए आपको डिबार कर सकता है, और ऐसा पहले भी कर चुका है। भले ही होम एग्जाम हो, उसके बाद भी डोंट इन्वॉल्व इन चीटिंग और मैल प्रैक्टिसेस, अदरवाइज डेफिनेटली ऑन द डे ऑफ रिजल्ट you will be disappointed if institute debarred you. Okay, so this is the you can say study plan or exam strategy for the remaining days for December 2022 exam. Okay, I am making videos in English. Reason is that so that every student who belongs to South also can easily understand, or it will helpful to all our CMA fraternity. So this is all about from my side in this video. अगर आपको कुछ suggestion लेना है तो definitely in the comment section or in Telegram channel you can ask me,
or whatever question, if you have some other questions, so definitely in the comment section you can ask me, I'll help you. So this is all about from my side in this video. Bye everyone, best of luck.